And do you have any pet peeves on set ki oh these things bother me a lot yaar iska dhyan rakh liya karo. Everything bothers me. There is I have a general issue with lack of attention to detail. So even small, like I always say that Breakfast with Champions has a carefully constructed, careless look. So I did the visual design for the first episode we ever shot, which was with Gary Kirsten. क्योंकि मुझे एक एंटी टीवी शो बनाना था, उसको टीवी शो बनते थे ना सिर्फ, तो मैंने कहा मुझे एक उल्टा एंटी टीवी 1 टीवी शो बनाना है मेरे को, बिल्कुल उल्टा. तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा कि पहले तो लोकेशन लॉक नहीं करेंगे, हम बिजी लोकेशन में कर रहे हैं, आने जाने दो लोगों को, कोई बात नहीं. पीछे प्लेटें टंग टंग, देखो आप गैरी कर्स्टन का एपिसोड, यूल सी ऑल दीज थिंग्स. लोग अंदर बाहर आ रहे हैं, एक गुरिंदर संधू बॉलर था वो भी आया है, इसमें तो फ्रेम के बाहर ही है वो, क्योंकि 6.5-7 फुट का है वो. तो मैंने कहा लोकेशन लॉक नहीं करेंगे, और जो हमारा मास्टर शॉट 2 शॉट है इसको हम सिल्वेट पे रखेंगे, क्योंकि वी वर फिल्मिंग इन द ओबरॉय होटल, ट्राइडेंट होटल इन टाउन, तो पीछे एक्सपोज इट फॉर द सी एंड मरीन ड्राइव. तो जो हमारे डीओपी थे, बेक बोरो स्टील पहला प्रोडक्शन था मेरा, तो मेरे प्यारे दोस्त हैं ग्लिच से, वरुण डुगीराला और रोहित राज, तो उनको मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि भेज दो यार कैमरा क्रू. तो उन्होंने भेजा कैमरा क्रू. तो उनके डीओपी परेशान कह रहे हैं सर पर ये तो सिल्वेट शॉट है. मैंने कहा हाँ मुझे सिल्वेट ही चाहिए. कह रहे इसमें तो कोई दिखाई नहीं देगा. मैंने कहा मुझे पता है सिल्वेट शॉट क्या होता है. वो घबरा गया, वो कह रहा है. लेकिन उसने बाद में वरुण को फोन करके किया कि कौन पागल तुम्हारा दोस्त, दिमाग तो नहीं खराब. उससे डोंट वरी, इट्स ओके. So for me it was the visual design of it was, I want to do it in a certain way. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. Enjoy the process. Yeah. So for me, it's always process over result. But अब जैसे कोई इंटरव्यू या कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे आपने राहुल द्रविड़ को बताया, वे यू नो कि लुक एंड शॉट वाइज 100% नहीं है, आपको सामने दिख रहा है वो लाइट आ रही है. Were you able to be 100% in this, like the conversation? Yeah, that I can do. So being a live broadcaster, my friend Ankur Tiwari, म्यूजिशियन, माय फ्रेंड अंकुर तिवारी केम. मेरे को बहुत लोग उनका एक ऐसे मीरा रोड का डॉपलगैंगर बोलते हैं. इंटरेस्टिंग है. यू शुड हैव हिम ऑन योर शो एज वेल. उनको भी बुलाओ, वो रिकमेंडेशन का किंग है वो. बट अंकुर वंस केम टू द एक्स्ट्रा इनिंग सेट एंड ही सेड आज मैं समझ गया हूँ कि हाउ यू डू दिस जॉब. कहते क्योंकि तेरे अंदर जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज है ना, दे कैन ऑल वेक अप एट द सेम टाइम. Because what happens is, what you guys don't know is that while I'm talking to camera, or while I'm conversing with the analysts on my show, or throwing to things or ad breaks or whatever, I have an earpiece, and in that earpiece there is constant chatter from the control room saying, all right, we're going to go to this next. We have the sponsored packet lined up. Okay, we have this from ground. Okay, Gaurav, I think we need to wrap up. 10, 9, 8. We're going to break. Hard count. So all of this is happening in my ear. So I, for the last 15 years, have been good at multitasking because that discipline came from being a live presenter, radio jockey, theatre, stage, and being a live sports broadcaster. So I have no problem. I can be looking at production, direction, editing, and having the conversation at the same time, no problem. And luckily for me, I don't have to worry about all these things because my Oak Tree creative director Neerav is completely on the ball with all these things. But I still keep an eye out for these things. वो मेरा अपना कीड़ा है. I like to know what's happening where. Like I know exactly the number of times he's gotten up and moved. Come here. एक बार उसने यहाँ पे ट्राइपॉड पे लात मारी थी. वो भी वहाँ चला गया, बाहर देख रहा है कि कौन आया है. मेरे को सब दिख रहा है. क्या हो रहा है. And since I'm up sports